Okay, so yesterday I have left you in this slide or in this page that what are the different parts of IC engine. Most of you have seen it, right? So I will not go to the details of it. Before this, I would like to go for the what are the different strokes. Okay, can anyone say what are the different strokes? Four strokes. Why it is called four-stroke engine? Yes. So the power is generated, power is produced in these four strokes, using these four strokes. Yeah, I know that is okay. But what are the different strokes? Do you know? The Okay, suction stroke. let you make me clear that IC engine আগতে পঢ়া নাই ন তহঁতি? You've not studied IC engine anywhere? Have you studied? First time at BME অলপমান পাইছিলো difference between Oh, okay, in BME you have got it. BME কোনে পঢ়াইছিলে? মই পঢ়াইছিলো নেকি? Hirok sir first time আছে আচ্ছা. Okay, so basically the four strokes means these are the four strokes. Okay, suction stroke, then compression stroke, then your combustion stroke, then your exhaust stroke. So initially क्या हो initially की है, suppose this is an engine. Okay, this is an engine cylinder, right? There is one inlet valve and another is suppose outlet valve. Okay, one is inlet valve and outlet valve. So this is the basic component of a cylinder. So suppose this is cylinder. And here what is there? A piston is there, right? There is a piston here. And this piston is connected to a crankshaft. Okay, so the piston will be rotating to and fro. It will reciprocate. এবাৰ ওপৰলৈ যাব এবাৰ তললৈ যাব. One it will go up, one it will go down. So up is called what? Anyone can say? This is called TDC and bottom is called PDC. That is T means top dead center and this is your bottom dead center. Okay, is it clear? মাজে মাজে ইয়েছ নো কৈ থাকিবি নহ'লে মোক লাগে তহঁতি আছনে নাই মই গম নাপাওঁ হা. yes sir yes Okay. So here the engine, what is happening here? This is a piston. Piston will reciprocate up and down, and this up and down, this is a crankshaft. This will rotate. That means the reciprocating motion will be transferred to the rotational motion. Okay, that is the work of a crankshaft. So crankshaft is designed in such a way that when there will be a reciprocating motion, that reciprocating motion will be how it is done. I will show you. So before that, you should know this. To know the engine, this is a basic thing. There will be a cylinder, there will be a piston. Okay, there will be inlet valve, outlet valve. One more important thing will be there. What is this? Fuel injector. It may be a fuel injector or it may be a spark plug. Okay, nice. So in case of petrol, it will be spark plug, and in case of diesel, it will be a fuel injector. Now, what are the four strokes? Starting or কি কৰিব লাগিব? Always in starting, there should be an input of fuel.
right? So that is, it is called inlet valve. It is called inlet valve. Okay, so there will be a fuel, or there will be a air fuel mixture, or only air. Okay, so here this will be a inlet valve, and this is your exhaust valve. This is exhaust. ठीक है sir? Now what are the four strokes? When they will be, now just simply you take an example, or just in your mind simply you take a vision of a syringe. Okay, syringe जो जेटा टानी दिया की है, when you pull the syringe there will be inlet of the medicine, yes or no? Similarly, when this TDC, when this piston will move down, there will be suction. Okay, there will be suction, and due to which this suction, it will flow downwards. Okay, let me make it clear. Only let me talk about this. ठीक है सर? Inlet valve, outlet valve. Okay, now what will happen? When there will be suction, that means this TDC or this piston will move down, right? Now when it move down, Yes. that means it will come here somewhat. That means from TDC to BDC, the piston is moving down. Now when piston is moved down, there will be flow of fuel or air fuel mixture. Okay, so for number one is called suction stroke. ठीक है sir? Now after this suction, what happens? This inlet valve closes, and outlet valve always safe. During the process, all the valves remains closed. Okay, only during the inlet valve, only inlet valve will be open, and outlet valve will close. And during exhaust, only exhaust will open, inlet valve will be closed. Okay, Close. yeah. So in suction stroke, the outlet valve will be closed, and so this is maintained by, or it is regulated by, do you know anything? Anyone can say what these valves are regulated by? Camshaft. Camshaft, yes, you know. মই এনে বুজাই আছো নেকি? All of you know regarding this? স্যার এইখিনি নলেজ আগত স্যার পাইছিলো তো এইবোৰ আগতে ঠিক আছে, so should I explain or not? বাকি কেইটাকো কৈছো, if you want then I will explain, otherwise I will move to next. So and simply shortly बुझाई दो this. Okay, other I want answer from all of them. Jaideep Nag, ये सब आता था? Okay, Menka is here. Menka, Yes, sir. what is your problem? Hello. What is your problem? Yes? কি হল, গুচি গল তাই? What is your problem? It's very difficult So, to get you. it's a network issue. Yeah, I know you are having lots of issues, but you are available only during your end semester, or during fees submission, or whenever you are having such type of problem, or you are available only during that days, but you are not available during the classes. But from this time, it will be not be tolerated. Just keep it in mind. In later, you do not come with lots of problems. Sorry, sir. It's not about sorry. I don't want any sorries. Next, what is the next stroke?
First stroke is suction. Next stroke is what happened? Compression. Compression. Compression stroke means what does compression mean? Compression. Compression is of two air-fuel mixture. Yeah. Right, compression is the air-fuel mixture. No, what is the meaning of compression? That means high pressure will be developed. During compression, all the valves will be closed. During compression, all the valves will be closed. Now here, the piston was in BDC. Now it will go to TDC. Okay, the piston it will go to TDC. This is the inlet. This is the outlet. These all the valves will be closed, and the air fuel mixture will be compressed here. So here what is happening? High pressure. Okay. So here high pressure will be developed. So this is called compression, and it is ready to burn now. Okay, it is compressed, now it is ready to burn. So what is the third stroke? What will be the third stroke? Stroke, sir. Expansion stroke. Power stroke. Power stroke. Okay. So what are other name is third stroke? Expansion. Power stroke. Okay. और की नाम है सर? Power stroke. Then পাৱাৰ ষ্ট্ৰক বুলিয়ে শুনিছো স্যাৰ একেবাৰে power stroke বুলি শুনিছ? Anyone else? Expansion. हाँ. Sir, expansion stroke. Expansion stroke. Good. আৰু কিবা আছে নেকি? Combustion. Okay. Because in this process only, in this stroke only, number 3 stroke is one of the very important stroke where power is developed, and how it is developed by expansion, and how the power is developed by combustion. So this number 3 stroke, it is named by 3. You may say power stroke, you may say expansion stroke, or you may say combustion stroke. Okay. That means here also this is closed, it is burned by this plug or by fuel. So here it will get burned, and it will reach to BDC. So initially the piston was somewhere here. Okay, it was in TDC, and then it will push the piston to BDC. So this is the main stroke. So this stroke helps to run other 3 strokes. Okay, this, and finally what is the stroke? Number 4? Exhaust. Exhaust. Since this is burned, now this has to be moved out, right? So this has to be moved out. How it will, again the BDC to TDC will go piston, and the outlet valve will be open. Outlet valve to खुली যাব ইয়াত. Outlet.
So all the 4 strokes are clear, and যেতিয়া ই ওপৰলৈ গুচি যাব, it will move to TDC, then the next stroke will again start from here. যেতিয়া ওপৰলৈ গুচি যাব লগে লগে ই আকৌ suction কৰিব. So this is the continuous process. Again there will be suction, again there will be compression, again there will be exhaust. So this is a continuous process. Now I have to say you one thing, that how on out of this 4 stroke only 1 power stroke is there. That means other 3 strokes should be run by the power stroke. How it is maintained? Using flywheel. Using crankshaft. Using Flywheel. Crankshaft. Flywheel, sir. Sorry. flywheel. Crankshaft. It's flywheel, sir. Okay. Let me see. Prahlad said by using crankshaft, right? Yes, sir. Actually, it will be flywheel, sir. Yeah. I have misplaced the name only. Okay. Yeah. So this is the how crankshaft is there. Okay. It is not exact diagram. This is the crankshaft. Or ইয়াত লাগি থাকে এনেকে piston. This is a piston. আৰু ইয়াৰ পৰা এনেকে cylinder থাকে. এনেকে এইটো. Okay. So this Yes, sir. will be rotating and this is to and fro motion. सबको समझ में आ रहा है? बाकी लोग भी बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Because only Prahlad and Partha is only speaking. Deepjyoti is also speaking. Others? Lakshmi? हाँ सर. तो हाँ बोलो, मेरा नाम क्यों लेना पड़ रहा है मेरे को? तुम लोग क्या प्राइम हाँ मिनिस्टर सर, आ हो रहे क्या? थे. तुम लोग प्राइम मिनिस्टर हो क्या? तुम लोग न्योता देना पड़ेगा, तुमको इनविटेशन देना पड़ेगा बोलने के लिए. ओके. सो फ्लाईव्हील कोड लगा থাকে? Part of Crankshaft. crankshaft. Okay. এনেকে flywheel to লাগা থাকিব ইয়াতে. Okay. So this flywheel helps to কি কৰে? What is the flywheel? So weight distribution মানে crankshaft টো ঘূৰাই থাকে. No. Crankshaft এ flywheel নুঘূৰে. So it stores energy for It the stores driver. energy. Yes. Energy store করে, sir. So the main function of a flywheel is given another example. Flywheel code দেখা পাইছো আৰু কুহিয়াৰৰ ৰক চাপা মেচিন, sir. Cohere rock sapa machine. That is a very common example of a flywheel. Yes, because it stores the energy and it helps to. যদি flywheel নহব, যদি গাড়ী এখন আছে, now we are having a car. You just imagine what will happen if there is no flywheel. So বাকী কেইটা ষ্ট্ৰক কৰিবলৈ পাৱাৰ নাপাব. না yeah, okay, good. বাকীটা ষ্ট্ৰোক দিবলৈ পাৱাৰ নাপাব, কিন্তু সি চলিবনে? নচলে sir. নচলিব, sir. হা? নচলিব, sir. Sir, বাৰে বাৰে self দি থাকিব লাগিব. Okay, good. বাৰে বাৰে চেল দি থাকিব লাগিব, তাৰপিছত ষ্টাৰ্ট হ'ব, তাৰপিছত কি হ'ব? চেল দিয়াৰ লগে লগে পাৱাৰ ষ্ট্ৰোকটো ধৰি ল'ব. অ. যেতিয়া চেল দিম তো পাৱাৰ ষ্ট্ৰোকত ষ্ট্ৰোকটো ধৰি ল'ব. So তাৰপিছত অলপ দেৰি পিছত ৰখি যাব আকৌ. ৰখি যাব. Okay. or sometimes যদি লো পাৱাৰফুল হয় ৰখি কি হ'ব? পাৱাৰ ষ্ট্ৰোকটো দিব, তো ক্ৰেংকশ্যাফ্টে কি কৰে? ক্ৰেংকশ্যাফ্টে কিছু যদি ভৰ মেচিনৰ ক্ৰেংকশ্যাফ্টে তোৰ এই হেডফোনটো লগাই ল'বে। কোনে মই নিজৰ মাতটো নিজে শুনি আছো। বিমলৰ ইক হৈ আছে. নাই sir সেইকাৰণে. ঠিক আছে? Okay, nice. Okay, so this is the basic thing. Suction. This is the diagram of a crankshaft. Okay, ইয়াত তলত এইডালত crankshaft ডাল লাগি থাকে.
ঠিক আছে, ই এনেকৈ ঘূৰি থাকিব, ই এনেকৈ ঘূৰি থাকিব, আৰু ইয়াত এইটোতে ক্ৰেংকশ্বাফ্টডাল লাগি আছে। অ'কে, along this direction, along this, ইয়াত 3D 2D ডায়েগ্ৰামত এনেকৈ আছে ন, তো ক্ৰেংকশ্বাফ্টডাল এনেকৈ থাকিব in this way towards my screen, towards your screen there will be a crankshaft, and at the end there will be a flywheel. Okay, now you say me, what is the work of a starter? Or you have seen certain generators, right? আজিকালি তহঁতি দেখিছ নে নাই দেখা generators by it is started চাইছো by sir। lever. হাতেৰে 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 কৰে। Sir. Yes, what is the main Yes, purpose? sir. What is the main purpose of this? স্যাৰ ফ্লাইহুইলটো ঘূৰাই দিব কাৰণে স্যাৰ, তেতিয়া ষ্ট্ৰোক এটা চলি থাকে। ক্ৰেমটো ৰোটেট কৰে। Yes, all are correct. Flywheel to ঘূৰিব, crank to flywheel ঘূৰাৰ লগে লগে crank to ঘূৰিব, but main aim is to get that power stroke. Yes, sir. এই power stroke to পালেহে it will keep on automatically running, right? So main aim to, so initially যেতিয়া 1880s or 1800 century, then also the engines were run by hand only. Okay, this is a very long story. Then after that এতিয়াহে হেৰি আহিছে, starters আহিছে, and still now I think all the bikes are having starters right now, nowadays, right? Yes, sir. চবত কি বুলি কয়, লিভাৰ মানে আগতেতো লিভাৰ আছিলে, লিভাৰটো এতিয়াও আছে, but all the bikes are having I think starters nowadays. So the main function of the starter is to produce or is to reach the power stroke, so that all the three strokes can be done. Any questions? Any questions? No. अगर नहीं है तो मैं क्वेश्चन पूछूंगा। कौन है इधर? Nice, sir. হাইড্ৰলিক ষ্টাৰ্টাৰটো কি আছিলে স্যাৰ? এইটো মানে একবাৰ পাইছিলো কিন্তু মানে স্যাৰ हाइड्रोलिक स्टार्टर? हाइड्रोलिक स्टार्टर ক'ত পাইছ তই? মানে প্ৰহ্লাদ এইটো তোৰ হেৰি কৰি লচোন, প্ৰহ্লাদ তোৰ মিউট কৰি লচোন, বহুত কিবা চাউণ্ড আহি ক। স্যাৰ আইচি ইঞ্জিনৰ পিডিএফ এটাত মানে টাইপছ অফ ষ্টাৰ্টাৰ আছিলে, তো তাতে স্যাৰ আপোনাৰ ইলেক্ট্ৰিক ষ্টাৰ্টাৰ, নিউমেটিক ষ্টাৰ্টাৰ আৰু হাইড্ৰলিক ষ্টাৰ্টাৰ এটা আছে। সেইটো বেলেগ ষ্টাৰ্টাৰ হ'ব। নিউমেটিক্স এণ্ড হাইড্ৰলিক্স ইজ সামথিং ডিফাৰেণ্ট। তাত আমি ষ্টাৰ্টাৰ ডেট ইজ এন টু কণ্ট্ৰল দি ৰবটিক আৰ্মছ। অ'কে, ৰবটিক আৰ্মছবিলাক কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ হাইড্ৰলিক্স অৰ নিউমেটিক্স প্ৰচেছ ষ্টাৰ্ট কৰে, ইউজ কৰে, বাট ডেট ইজ নট এ প্ৰচেছ টু ষ্টাৰ্ট দি ইঞ্জিন। হাইড্ৰলিক দি ষ্টাৰ্টাৰ সেইটো বেলেগ কনচেপ্ট হ'ব। তই ইউ আৰ জাষ্ট মিছ মেনেজিং আই থিংক চামৱাৰ। ঠিক আছে, আৰু কিবা কুৱেশ্যনছ? হোৱাট ইজ নিউমেটিক? জয়দীপ নাগ? এয়াৰটো কম্প্ৰেছ কৰি স্যাৰ পাহৰিলো স্যাৰ। पता नहीं सर न्यूमेटिक হা হা सर न्यूमेटिक के बारे में सर पता नहीं था। স্যার এইটো পাহৰিলো স্যাৰ, পুৰা ভালকে মনত নাই। নিউমেটিক কোনে ক'ব পাৰিব? নিউমেটিক এণ্ড হাইড্ৰলিক, হাইড্ৰলিক কি হয়? Hydraulic is using fluids and pneumatic is using air. Yeah, that is the basic difference. That is the basic. ओके सर। Okay, নিউমেটিকত প্ৰেছাৰ দুটাতে ইউজ হ'ব, দুইটাতে পাম্প থাকিব প্ৰেছাৰাইজ কৰিবলৈ। উইদাউট প্ৰেছাৰাইজিংটো কাম নহ'ব। ঠিক আছে, আৰু সেই পাম্পকেইটা চলাবলৈ আকৌ তোৰ ইঞ্জিন লাগিব, ৰাইট? এই ইঞ্জিনকেইটা আকৌ তোৰ কাপল কৰিব পাম্পৰ লগত, পাম্পে আকৌ প্ৰেছাৰাইজ কৰিব, প্ৰেছাৰাইজ কৰাৰ পিছত it works. Okay, I want to ask some questions. Joydeep Nath? हाँ सर। हाँ, तुम क्या आइसिंग के बारे में क्या जानते हैं? हाँ आइसिंग इंजन के बारे में क्या जानते हैं? सर थोड़ा सा पढ़ा था सर, लेकिन ज्यादा नहीं जानता। नहीं, आज का क्लास का क्या
आज का क्लास में जो कराया मैंने whatever I have taught उसमें क्या प्रॉब्लम है? सर एक मुझे सर डाउट है सर, वो फ्लाईव्हील के बारे में। हाँ बोलो, पूछो ना तुम लोग। सर जो टू स्ट्रोक जो इंजन होता है उसमें भी तो फ्लाईव्हील यूज होता है, किसमें, कौन सा इंजन में? टू स्ट्रोक इंजन पे। टू स्ट्रोक इंजन में तुम्हारा इतना प्रॉब्लम नहीं होता है क्योंकि वो दो स्ट्रोक में एक पावर प्रोड्यूस हो जाता है, उसमें भी फ्लाईव्हील होता है हाँ सर। छोटा सा, ठीक है, लेकिन उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं क्योंकि उसमें पावर लॉस नहीं होता है उसमें। और मेन मतलब फोर स्ट्रोक में जो फ्लाईव्हील का वो मतलब जो काम होता है वो ज्यादा मतलब वो पावर जो स्टोर करके रखता है सर। हम्म। ठीक है सर। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? क्वेश्चन था सर वो जैसे पावर जैसे फ्लाईव्हील स्टोर करके रखता है ना फोर स्ट्रोक के लिए, तो टू स्ट्रोक में तो सर मतलब टू स्ट्रोक में ही वो पावर जनरेट हो जाता है, तो फ्लाईव्हील का वो मतलब महत्व कितना होता है। हाँ मैं तो, यू मीन यू आस्किंग अबाउट द इम्पोर्टेंस? हाँ सर। Obviously, in two stroke, out of two stroke, only one stroke is power, right? और एक हाँ stroke सर। तो उसको चलाना पड़ेगा ना। अगर वो हाँ टू सर। हाँ स्ट्रोक में सर। अगर फ्लाईव्हील नहीं दिया तो टू स्ट्रोक में क्या होगा, वो रुक रुक के चलेगा। पावर देगा वो रुकेगा, पावर देगा वो रुकेगा, जब वो सेकंड नंबर स्ट्रोक आएगा वो रुक जाएगा, और इवन पावर देगा रुकेगा। सो इट विल कंटिन्यू इन दिस वे अगर फ्लाईव्हील नहीं होगा, राइट? अभी फ्लाईव्हील है हाँ इसलिए सर। वो स्मूथ ले रहा है, जब तुम ड्राइव करेगा वो स्मूथ लेगा। ओके, तो इसमें भी ठीक। तुम्हारा जो फोर स्ट्रोक में है, अगर इसका भी तुम्हारा जो फ्लाईव्हील का साइज अगर डिफरेंशिएट होता, इफ देयर विल बी डिफरेंस इन द साइज ऑफ द फ्लाईव्हील, दैट टू मच ऑफ पावर कैनॉट बी एब्जॉर्ब, बाकी तीन का जो स्ट्रोक है उसमें अगर जितना पावर चाहिए उतना अगर साइज का अगर तुम नहीं बनाएगा फ्लाईव्हील, देन ऑल्सो वो रुकेगा चलेगा। सो दैट्स वाई देयर शुड बी ऑप्टिमाइज्ड हाँ सर। साइज ऑफ द फ्लाईव्हील। और अगर तुम फ्लाईव्हील बड़ा भी कर दिया, वो ज़्यादा हैवी हो जाएगा, हैवी हो जाएगा तो वो पावर स्ट्रोक अल्टीमेटली सेम चीज़ हो जाएगा। सो देयर शुड बी एन ऑप्टिमम, ऑप्टिमम साइज। ये सब डिज़ाइन में पढ़ेगा तुम लोग, डिज़ाइन ऑफ फ्लाईव्हील पढ़ा है तुम लोग या अभी ऐसा है? मतलब सर वो फ्लाईओवर का ही एक अलग से मतलब डायमेंशन दिया होता है मतलब वही इंजन के अभी लिए। अभी तो डायमेंशन दिया होता है क्योंकि अभी तो ऑलरेडी अवेलेबल है। तुम अभी हाँ इंजन सर। तुमको डिज़ाइन करना नहीं पड़ेगा ना। यू नीड नॉट डिज़ाइन द इंजन्स नाउ, ऑलरेडी इट हैज़ बीन डिज़ाइन। और जो मारुति गाड़ी है, जो भी तुम्हारा होंडाई है, कोई भी इंजन नहीं बनाता, वो लोग एक ही जगह से इंजन्स लाते हैं, एक ही जगह जस्ट दे वर्क ऑन ऑन वेरियस फार्दर, मतलब वो जो सफिस्टिकेशन में वो लोग काम कर रहे ज़्यादा। जो इंजन है, बेसिक चीज़ है, वो एक ही जगह से आता है, वो लोग सब एक ही इंजन यूज़ करते हैं। मारुति का जो इंजन यूज़ करता है वो भी हुंडई में यूज़ करेगा। ओके, सो कोई भी अभी डिज़ाइन कोई नहीं कर रहा, ऑलरेडी इट हैज़ बीन डिज़ाइन, इट हैज़ बीन डिज़ाइन टू ऑप्टिमम लेवल। तो इसमें ठीक करने का कुछ मतलब देयर इज नो point of improving them. Now the improving is on efficiency, how they can improve the efficiency by आजकल तो एल्यूमिनियम का इंजन निकल रहा है टू मेक इट लाइट। जितना लाइट होगा उतना फ्यूल एफिशिएंसी होगा। ओके, टू स्ट्रोक एनीवन कैन एक्सप्लेन? टू स्ट्रोक ক'ব পাৰিবি নেকি কোনোবা? পাৰ্থ মনত আছে নেকি টু ষ্ট্ৰোক? আছে হা, স্যার, আছে কি এইটোতে বুজাচোন। স্যার। মই জুম কৰি লৈছোঁ। তই দেখা নাই নেকি এইটো? চাইছোঁ স্যার, জুম কৰি লৈছোঁ, মানে এই ফুল স্ক্ৰীন নাহে ভালকে। ওকে, ফুল তই স্ক্ৰীন জুম কৰিছ। অঁ। Now, one thing you say me, all of you, if pictures, the photos are they visible to everyone? मैंने पूछा ही नहीं अभी तक, किसने बोला भी नहीं मेरे को। Yes, sir. Yes, sir. It's স্যার, visible. ইট ইজ ভিজিবল। क्या স্যার, क्या ক্যান আই গো? पता है? हाँ, या गो। सब लोग सुनो, স্যার, सब लोग सुनो। sir, in two-stroke engine, there are two ports. One is the inlet port and one is the exhaust port. Here, there are no valves like in four-stroke engine. Uh, the in the suction stroke, when the piston is uh,
at BDC, suction takes place, and the and the आराम से आराम से रहो. So the वो जो port का he is saying about a port, these are the two ports. Okay, they're just parallel to each other. This is the exhaust and this is the outlet. Okay, now हाँ कोई जा. sir, when the piston is at BDC, Hmm. bottom dead center, Hmm. from the inlet port, the airfoil mixture is sucked inside, and वो TDC as होगा, the TDC. ই ওপৰৰ পৰা তললৈ যেতিয়া আহিব তেতিয়া হ'ব, ওপৰৰ পৰা যেতিয়া তললৈ আহিব তেতিয়া ইনলেট সোমাব. গম পাইছ? oh, sorry, This it is a TDC, sir. piston is in Sorry. TDC and when it will TDC. come down, air fuel mixture will be entering Mixture here. is, Yes. Okay. sir, Opposite ক. it will go through, the direction is given on the Yes. second diagram, sir. This is the direction. The- Yeah. And the airfill mixture through the side of the engine cylinder will, as the piston moves downwards, the exhaust port will be closed and it will move inside the chamber, sir. So this is And- another figure. So when it will Yes, be ইয়াত এইটো ইনলেট হৈ গৈছে ন, ই যেতিয়া whenever there will be spark হোৱাৰ লগে লগে তললৈ আহিব. Yes, sir. सुनिए सर, स्पार्क होने के बाद ये नीचे आएगा. जब वो नीचे आएगा देयर विल बी सक्शन. ओके, दो स्ट्रोक एक साथ हो रहा है. एक्सपांशन एंड सक्शन, इसमें दो स्ट्रोक हो रहा है एक साथ. ओके, इन 4 स्ट्रोक में क्या होता, अलग अलग होता था. इन 4 स्ट्रोक एक्सपांशन अलग होता था, कंप्रेशन अलग होता था. लेकिन इसमें देखो तुम, जब ये when there will be a spark, when there will be a combustion, it will push the piston downward. So that is a combustion stroke and simultaneously वो क्या करेगा, इनलेट भी अंदर आ जाएगा. ओके, सो जब इनलेट अंदर आ जाएगा साइमल्टेनियसली नेक्स्ट स्ट्रोक क्या होगा, एग्जॉस्ट बाहर जाएगा और इनलेट ऊपर आ जाएगा. समझ रहा है? हाँ सर. हाँ, तो उसमें दो स्ट्रोक एक साथ हो रहा है. तो व्हेन देयर विल बी एक्शन कंबशन होने के साथ साथ में तुम्हारा इनलेट होगा, फिर ये आके यहाँ पे हाँ, रुक जाएगा. ओके, देन देयर विल बी कंप्रेशन होगा. ओके, कंप्रेशन होगा एक साथ और उसमें वापस यहाँ पे आ जाएगा. सो दैट इज द 2 स्ट्रोक्स आर टुगेदर. दैट्स व्हाई एक रोटेशन पे एक स्ट्रोक होता है. हाँ सर. ठीक है, इसमें 2 रोटेशन पे एक स्ट्रोक होता था. इसका मतलब एक रोटेशन हम लोग को चलाना पड़ता था और इसमें एक रोटेशन में एक ही स्ट्रोक होता है. दैट्स व्हाई इसमें इतना पावर लॉसेस नहीं है. ठीक है, लेकिन इसमें फ्यूल एफिशिएंसी बहुत लो है बिकॉज इसमें बहुत लीकेज होता है. बिकॉज यहाँ पे देखो तुम, फ्रेश एयर भी चला जाता है कभी कभी, फ्रेश फ्यूल भी कभी भी एग्जॉस्ट के साथ चला जाता है. बट दिस सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स आर बीइंग हैव टू मिनिमाइज. और इसमें एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, तुम यहाँ पे अभी फॉर ऑयलिंग, ओके, इसमें देखो 4 स्ट्रोक में देखो, इसमें ऑयलिंग क्या, इसमें ऑयलिंग चैम्बर रहता है. हम लोग क्या डालते हैं, मोबिल डालते हैं, राइट? हाँ सर. लुब्रिकेंट डालता है. तो लुब्रिकेंट क्या होता है, व्हाट इज द यूज ऑफ लुब्रिकेंट हियर? friction যাতে কম হয় স্যার Okay, it helps in cooling also. But the main aim is to lubricate, right? So here what is happening, there is a different lubricant chamber. So this is a lubricant chamber also. Okay, so this lubricant, ये जब ऊपर जाता है, ये साइड में यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, पाठा? इसमें है रिंग्स होता है, यहाँ पे 2 रिंग्स होता है, piston rings, पिस्टन रिंग्स. ओके, compressor ring, or oil ring. oil ring. So there is a seal here. Okay, that helps to airtight. इतना भी airtight नहीं होता है, but it is very airtight. Okay, and so for sliding here we need oil. That's why there is a oil chamber which helps to lubricate this cylinder. But in 2 stroke, अभी भी देखना तुम 2 स्ट्रोक पे वो ऑटो वाला वो क्या करता है, उस यहाँ पे तुम 2 स्ट्रोक में देयर इज नो डिफरेंट ऑयल चैम्बर. वो लोग क्या करता है, कभी देखा है? Fuel के सर साथ फ्यूल मिक्सचर. lubricant हाँ, mix फ्यूल दीजिए. के साथ ही वो लोग लुब्रिकेंट डाल देता है. यस, फ्यूल के साथ ही वो लोग लुब्रिकेंट डालता है. तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दैट्स व्हाई इट इज इसमें तुम्हारा
वो जब लुब्रिकेंट जलता है, इसमें लुब्रिकेंट भी जलता है, तो लुब्रिकेंट जलने से वहाँ पे बहुत द एग्जॉस्ट इज वेरी प्रॉपर्टीज ऑफ द एग्जॉस्ट गैस इज वेरी डेंजरस. ओके, so that's why it is being not used nowadays, and still it is used in some small machineries. Okay, तो अभी बंद हो जाएगा ये 5 मिनट में. You give your attendance.